Alright, so we have question 14 over here, which says the number of matrices B in A such that determinant of B is equal to 0 is. Okay, we've already seen the 12 matrices that we've got from question 11. इसमें हमें ये देखना है कि कौन कौन से determinant 0 है. Okay. तो जैसे ही हमने पहले किया था, what we do is we'll just say if there are two rows or two columns which are same, right, then the determinant of the matrix is 0. Right. तो ये 0 हो गया, ये 0 हुआ, and then this is a 0 again. Right. And this is a 0. Right. Again after that this is a 0. And this नहीं, ये 0 नहीं है, this is a 0. Right. Because we have 1 and 2 same. So we have 6 matrices which have determinant as zeros. Okay. That's the answer to this question. Okay. तो इस क्वेश्चन में बस ये था कि सिंस इट वाज अ पैराग्राफ क्वेश्चन और हमने क्वेश्चन 11 में भी इसको करने का तरीका देखा था कि हम कैसे डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे जिनकी वैल्यू 0 है. तो बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका है. आप ये देख लीजिए कि इज़ देयर एनी पेयर ऑफ कॉलम्स और पेयर ऑफ रोज जिनकी वैल्यूज सेम है, तो द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी 0, व्हिच वी हैड ऑलरेडी सीन इन क्वेश्चन नंबर 11. तो इन चारों क्वेश्चंस में हमने ये देखा कि आपका अगर आपने ये फिगर आउट कर लिया है कि मैट्रिसेस की टाइप क्या है, वो 12 मैट्रिसेस का फॉर्म क्या है, तब चारों क्वेश्चंस में बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन है और हम चारों बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हैं. तो पैराग्राफ क्वेश्चन देख के डरिए मत, बहुत सिंपल होता है. स्टेप बाय स्टेप कीजिए. 4 क्वेश्चंस हैं आपके और चारों क्वेश्चंस हो जाते हैं अगर आप सही से अप्रोच लगा ले. फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने देखा था क्वेश्चन 11 में हमने सही से अप्रोच निकाल के हमने 12 मैट्रिसेस निकाल ली थी, तो उससे हमारे चारों क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाते हैं. ऑल राइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 14. Alright, so we have question 15 over here which says let omega be a complex cube root of unity with omega not equal to 1 and P is a n cross n matrix with elements of P such that Pij is equal to omega to the power I plus j, where P square is not equal to null matrix. Then the value of n is. Okay, इस क्वेश्चन में मुझे काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है. कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स भी हैं और मेट्रिसेस भी हैं, तो उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? पहले विल राइट द मैट्रिक्स P. Okay. P equal to some. We know that Pij equal to Wi plus j. Right. Right. So P11 would become Wi1 plus 1. That would be W square. Right. That is omega square. And then this would be 1 plus 2 omega cube. Okay. 1 plus 3 omega 4, so on. Omega 1 plus n. Right. And here we would get a n plus 1. And Okay. then the last element would be omega n plus n, right? Right. So that's a 2n. Okay. We are given that p square is not equal to 0. So just let's calculate p square. Okay. P square would be p into p, right? Okay. This into the same matrix again. Right. That means this row into this column first. And what would that give us? It would give us a omega square whole square plus omega square into omega square. Yeah, and again a omega cube whole square. So Right. omega cube square plus omega 4 square, so on. In the ending we would get a omega n plus 1 whole square. Right. Since And the same term is being multiplied with the same term, and Yeah. these terms are getting And added up. when you do the last thing here, you get this, like this row into this column, Right. right? So here you get just let's calculate this. So here we get a omega n plus 1 into omega square, that will be omega n plus 3, Right. plus omega n plus 2 into omega cube, that would give us a omega n plus 4, so on. In the ending you would get a omega 2n into omega 2n, that would give us a omega 4n. Okay. That's it, right? Like this into this. Yeah, we would get a omega 1 plus n into a omega 1 plus n, that would give us a omega 2n plus 1, that's done. Omega 3n plus 1, right? Right. And this would continue on like this. Now let us take the arbitrary value of n as 3. Okay. So why only 3? I mean, why not 2 or 1? Is it because omega cube is equal to 1 for a cube root of unity? No, it's not like that. Yeah, we just want to check
for what values it gives for omega n equal to 0, n equal to 1, n equal to 2, and n equal to 3. Right. So that we get a... The whole idea is that why did you choose 3? I mean, why only 3? How will a student know that I have to take n is equal to 3 or n is equal to 2? Is it because... Yeah, it is because omega cube equal to 1. Right, so maybe... So whenever you multiply with an omega cube, you're just multiplying by a 1. Which so does that not makes make our any job difference. easier. Okay, so the idea is 3. Yeah, 3. Okay. So now the p square, it becomes here omega square whole square plus omega cube whole square plus omega power 4 whole square, right? Right. And here it would become a omega power 5 here plus omega power 6 plus omega power 7 here, and then here you would get a omega power 6 plus omega power 8 plus omega power 10 again. Right. This would be 5, 7, 9, and the elements would go on like this. So if we take omega cube as a -1, it's a complex cube root of unity, right? Okay. So this becomes omega power 4 plus omega power 6 plus omega power 8, here omega power 5, omega power 7, omega power 9, and again omega power 6 plus omega power 8 plus omega power 10. Okay. Now we go down. What we get is, see, omega power 4 is equivalent to omega because it is omega into omega cube. Exactly. Omega cube Plus- is anyway 1. Yeah, and this would be a 1, Okay. omega cube square. Right. This would be omega square. Okay. So Similarly- basically we can take modulo 3. I mean, Yeah. we can, take Yeah. the remainder of that exponent when divided by 3. That will be your final omega power. I mean, Yeah. because since omega Mhm. cube is anyway 1. Yeah. Okay. And omega power 5 would be a 2 again, plus Right. omega plus 1, and this would be a 1 plus omega square plus omega. So, and 1 plus omega square is 1. Oh yeah, that is a 0. So this is 0, this is a 0, and this is a 0. So what you get is, these are all zeros. Right? Okay. So if you take n as the multiples of 3, what is going to happen is, P square first it becomes- was 3 here, so it becomes a 6, it becomes a bigger matrix, and here you're just multiplying by cube root of unity again, like omega cube, omega cube, omega cube. You're multiplying this whole term by omega cube again, Okay. right? So what does that become? You're just multiplying this by omega cube, so you're actually not making a difference anywhere. Okay. So whenever you take the multiples of 3 as n, you get a zero matrix. P Okay. square is a zero matrix. Which is not what we want because Yeah. P square is given non-zero. Yeah. Okay. So we want n as 57. We don't want n as 57. It could be 55, 58, or 56. Okay. So that's our answer. Yeah. Okay. So what we've seen in this question is that a matrix is given and a restriction is given that that matrix squared should not be equal to null matrix. So basically we write down the matrix, expand it. इसमें एक ही चीज़ नोट डाउन करने की है कि आप सबसे पहले आपको ये स्ट्राइक होना चाहिए कि आप n इक्वल टू 3 ही क्यों लेंगे. n इक्वल टू 2 या n इक्वल टू 1 हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें पता है कि n इक्वल टू 3 लेने से हमारा इस तरह से सिंप्लीफाई हो जा रहा था कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है. तो वो चीज़ हम यूज़ कर सकते थे ताकि हमारा और सिंप्लीफाई हो जाता. तो जब हमने वो लगाया हमने देखा कि अगर हम मल्टीपल्स ऑफ 3 में ले रहे हैं n को तो हमारा p स्क्वायर 0 आ जाएगा जो कि हमें नहीं चाहिए. तो फाइनली आर आंसर इज ऑल दोज केसेस वेयर द n इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. तो इस क्वेश्चन में बस ये है कि आप उस टर्म को, जो आपकी एक टर्म आ रही है ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, वो जो पूरा एक्सप्रेशन आ रहा है उसको आप कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और कैसे आप देखते हैं कि अगर आप n बढ़ा भी देंगे तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे. जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि बस ओमेगा क्यूब का चेंज आता है और ओमेगा क्यूब तो 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो कोई ऐसा चेंज आया नहीं है. तो उससे हमें ये उस कॉन्सेप्ट को लगा के हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया. ऑल राइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 15. ऑल राइट, सो वी हैव क्वेश्चन 16 ओवर हियर व्हिच सेज, भाई काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ये. चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. लेट m and n be 2 3x3 matrices such that mn is equal to nm. Further, if mn
further, if m is not equal to n square and m square is equal to n to the power 4, then the options given are determinant of m square plus mn square is 0. The option B says there is a 3 cross 3 non-zero matrix U such that m square plus mn square into U is a zero matrix. Option C says determinant of m square plus mn square is more than equal to 1. And option D says for a 3 cross 3 matrix U, if m square plus mn square into U equals the zero matrix, then U must be a zero matrix. Alright, तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे स्टार्ट करेंगे. So here the basic thing is they have given us mn equal to nm. Right. And they have also told us ki m not equal to n square. Right. And m square is equal to n power 4. Right. Okay. Now they want the determinant of matrix m square plus mn square, and that would be determinant of matrix m square plus mn square would be determinant of m into m plus n square. Right. Right. Since we are using the property that determinant of A into B is determinant of A into determinant of B. Right. Now mn is equal to nm and m square is equal to n power 4. Right. Now I'm going to manipulate this. Okay. M square equal to n power 4. I'm going to write mn equal to nm. I'm just multiplying this with n on both sides. Okay. So this becomes mn square equal to nmm. Okay. So mn square is equal to n square m, because mn is equal to nm. Okay. So I'm just reverting this and this becomes n square m. Okay. Similarly, m square n would also be equal to nm square. Right. Right. Since you could multiply m both sides and manipulate them. Yeah. Okay. So now what I do is m square is equal to n square, right? Right. I'm gonna write this as m square minus n power 4 equal to 0. Okay. That becomes m minus n square into m plus n square. We're gonna check this if we can write it or not like this. See, this becomes an m square minus mn square minus n square m plus n power 4. Okay. I'm sorry, this is a plus. So this becomes a plus and this becomes a minus. Okay. And these two are equal from our equation, so these two get cancelled and m square minus n power 4 equal to 0. Okay. So how would one get, see, it's given that m square is equal to n power 4. Yeah. So how would one get the idea that you have to factorize this? Is it because We have 1 plus m plus n square here. right? So we just have to factor this. This has m minus n square here. Right. And when multiplied we get m square minus n power 4. So if we just observe the answers, it's pretty clear that we have to use factorization here. Okay. So you're saying that m square is equal to n power 4 दिया हुआ था और हमें जरूरत है m plus n square की, तो उससे हमें आना चाहिए, वो क्लिक होना चाहिए कि वो उस फॉर्म में फैक्टराइज करने की जरूरत है. और यहाँ पे इक्वेशन भी ऐसी थी कि हम उसको फैक्टराइज कर सकते हैं बिकॉज़ हमने ऑलरेडी डिराइव कर लिया इज इक्वल टू n स्क्वायर. तो m plus n square into m minus n square. Okay. Now what we got was m minus n square into m plus n square is equal to 0. Right. अगर दो matrices का multiplication 0 हो रहा है, तो what are the probable cases? We'll have 4 cases, right? एक तो a equal to 0. कह सकते हैं कि अगर दो matrices का product 0 है तो उनमें से एक null matrix होगी मेरी. We cannot say that. Why is that? I mean, because matrix multiplication में it is not, we are not sure कि if a be equal to 0, a has to be 0 or b has to be 0. Okay. Can we like see a counter example so that it's clearer to the students? I mean, could we like say that if a is equal to, let's say a हमारा हो जाता है हमें एक सपोज हमने a ऐसा दिया जो कि 0 नहीं है और हम कह रहे हैं कि हमारा b ऐसा है कि b is equal to let's say 0 0 0 and 1. तो इस केस में सिर्फ हमें काउंटर एग्जांपल यूज करना है. दोनों 0 नहीं है. a and b दोनों नल नहीं. अब हम a और b का मल्टीप्लिकेशन लेके देखते हैं कि वो क्या आ रहा है. ab is equal to, let's see what the is it coming out to be 0 or not. And this gives us a 0. See. So ab equal to 0.
ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और उनका मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट्स इन अ नल मैट्रिक्स, बट फिर भी दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर ए बी इज इक्वल टू 0 देन इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए और बी हैज टू बी 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका ध्यान। ये मैट्रिसेस हैं, स्केलर्स नहीं, इन स्केलर्स इट हैज टू बी ट्रू। यहाँ पे हम रियल नंबर्स नहीं मल्टीप्लाई कर रहे कि अगर उनका मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों में से एक 0 होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या पॉसिबल केसेस अराइज करती है हमारी ए बी इज इक्वल टू 0 से। सपोज वी हैव ए बी इक्वल टू 0। ओके, एक केस ये हो सकता है कि दोनों 0 नहीं है, और एक केस में सपोज ए 0 एंड बी इज नॉट 0। एक और केस हो सकता है बी 0 ए नॉट इक्वल टू 0, एंड द लास्ट केस वुड बी बोथ आर zeros. ओके, And similarly, if m minus n square into m plus n square is equal to 0, right, then m minus n square equal to 0 and m plus n square is equal to 0. okay, This whole thing would be 0. right, Or m minus n square equal to 0 and m plus n square is not equal to 0. okay, Or m minus n square is not equal to 0 and m plus n square is equal to 0. okay. या फिर दोनों not equal to 0. Okay? तो m plus n square not equal to 0. उस केस में फिर हम क्या हमें उस केस में डिटर्मिनेंट की बात करने की जरूरत होगी, क्योंकि उससे हमें कुछ कंस्ट्रक्टिव आया नहीं है। इफ बोथ आर नॉन एंड वी ऑलरेडी नो दैट हमें दिया हुआ है कि m नॉट इक्वल टू n स्क्वायर, दैट मीन्स m माइनस n स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, राइट? राइट, तो हम ये दोनों केसेस तो रूल आउट ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली, सो दीज आर आर टू केसेस। राइट, और इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है? m माइनस n स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, सो m प्लस n स्क्वायर कैन बी 0 और m plus n square cannot be 0. Right. So what we have to find here is m into m plus n square, इसका डिटर्मिनेंट 0 है कि नहीं ये हमें जानना है। ओके, राइट। See, if m minus n square is not equal to 0, in this case m plus n square has to be 0. ओके, That means the determinant has to be 0. ओके। If m minus n हम square ये is कह not सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स नल है तो null उसका है। डिटर्मिनेंट 0 होगा। 0 होगा। क्या हम रिवर्स केस भी कह सकते हैं कि नहीं, अगर रिवर्स केस हम नहीं कह सकते। ओके, It cannot be 0. ओके, फॉर एग्जांपल For यहाँ पे हम example, बी ही हाँ। देख लेते हैं हमारा। ऐसा था, सपोज वी हैड अ मैट्रिक्स लाइक दिस, राइट? राइट, 0 0 0. दिस इज नॉट अ 0 मैट्रिक्स, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट 0 है। ओके, सी मैट्रिसेस लाइक दिस, दीज आर एग्जाम्पल। लाइक अगर बी 0 नहीं है then its determinant can be 0 or cannot be 0. Okay. But if its determinant is 0, then it is not necessary that b is has to be 0. ओके, But if b is 0, then its determinant has to be 0. ओके, Here, if in this case m minus n square not equal to 0, m plus n square not equal to 0. But in this case, determinant of m minus n square has to be 0 and determinant of m plus n square has to be 0. ताकि वो हमारी वो कंडीशन Condition सेटिस्फाई करे satisfy कि कर ले। m minus n square into m plus n square is equal to 0. So in both these cases, what we get is determinant of m plus n square is a 0. ओके, So we can conclude that determinant of m into determinant of m plus n square is a 0. ओके, So our first solution, the first option is correct. Determinant of m square plus m and m n square is 0. And दूसरा क्वेश्चन ये है कि there is a 3/3 0 non-zero matrix U such that m square plus m n square U is a 0 matrix. ओके, Okay. Now into U is a 0 matrix. राइट, That means this is a matrix A and this is U is equal to 0. राइट। सो दिस इज लाइक अ सिस्टम ऑफ System of equations. And for a system of equations to have infinite, like there has to be at least one solution. It has to be consistent. ओके, So what do we have to do for that? one solution, okay, one solution will be what we are trying to find Here out the is, determinant of this is 0. right, So as this is 0, there will be infinite U's for which infinite solutions. infinite solutions. Okay, So obviously we have at least a single solution such that this is a 0 matrix. okay, so since हमारा इक्वेशन ऐसा बन रहा था कि ए यू इज इक्वल टू 0 और हमारे पास ऐसा दिया हुआ था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, सो देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस फॉर द मैट्रिक्स यू। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो उसमें से एक सॉल्यूशन तो अपना जीरो बन जाता है और बाकी जितने भी सारे सॉल्यूशंस है वो नॉन जीरो सॉल्यूशंस होंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक मैट्रिक्स यू आती है व्हिच इज अ नॉन जीरो मैट्रिक्स such that this is a 0 matrix. Okay, so what about options C and D?
डिटर्मिनेंट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर तो हमारा 0 आ गया, सो ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग. ओके And then for a 3 by 3 matrix U, if m square plus mn square equals the zero matrix, then U is the zero matrix. ओके It is not compulsion that U zero matrix है. U zero भी हो सकता है, but it's not compulsory that U has to be only a zero matrix. बिकॉज हम देख चुके हैं कि हमारे नॉन ट्रिवियल Non-trivial सॉल्यूशंस भी आ रहे हैं आ सिंस रहे वी हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस Yes. पॉसिबल. ऑलराइट, This is also wrong. ओके. सो इस क्वेश्चन में व्हाट वी सॉ वाज कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी हुई थी, एम एन इज इक्वल टू एन एम और ऐसे एम स्क्वायर इज इक्वल टू एन पावर 4. वो रिस्ट्रिक्शंस को यूज़ करके हमने फैक्टराइज किया. अब हमने आपको फैक्टराइज करने का रीज़न भी बताया था कि हमने क्यों फैक्टराइज किया, क्योंकि क्वेश्चन का फॉर्म ऐसा है कि हमें फैक्टराइज करने से चीज़ें सिंप्लीफाई होंगी. फिर फैक्टराइज करके हमने कुछ केसेस ली, आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई इसमें कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ एक मैट्रिक्स 0 है तो ज़रूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होगा. बट इफ़ अ मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू 0. ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया एंड फाइनली हमारा आंसर ए और बी आया. ऑल राइट, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 16.